Good afternoon, ma'am. So today we'll continue our discussion on logistic regression. So in previous session, I gave you just an overview of logistic regression, what kind of problems we can solve through logistic regression. And I asked you to check these videos and answer some of these questions. And other than that, we also looked what is the difference between linear and logistic regression. So like linear is a linear relationship, and whereas logistic does not assume a linear relationship. Dependent variable is categorical in logistic regression, where it is continuous in linear. And then the equation for linear regression is y equals to mx plus c, whereas for logistic it's this. Then exponential of y, this y is the same thing, this linear equation. And then straight line, it goes for sigmoid curve. It uses OLE, that is ordinary least squares. Whereas logistic regression uses maximum likelihood estimation. This does some use linear model. Here we use generalized linear model and binomial distribution. Okay, so these are the differences between linear and logistic regression. And this is the case study we have to cover using logistic regression. I also gave you some background of this case study. So basically, this is online catalog company, and they want to identify those customers who make a purchase when any advertising, kind of thing like online catalog is sent to them. The customers who make a purchase are actually the ones who are profitable. So they want to identify those customers so that they don't spend their money on those customers who are not buying the products. So they had this data on recency, frequency, and monetary value. So recency is that how recently the person bought. Frequency is how frequently the person buys, and monetary value is how much a person spends with them either over time or per year. And we also discussed there are some uses of doing this regression on this RF value. Hello? क्या करने? Yes, ma'am. So, Yes, ma'am. are you able to understand till now? Yeah? Okay. So, Ashish, please put yourself on mute. कल तो बृहस्पति है, परसों बोलना. 3 users. So, one, you can predict, you can check for शुक्रवार response की. of customers to these marketing झूले लग actions, गए. and whether you can predict the churn before it happens. All these things we will discuss. So, this is the data set. Okay. अच्छा. मैम निकाल दो. अच्छा. तो क्या क्या सामान लाते हो तीज में? Great. क्या क्या लेके आते हो? मैम वो लिए यो घेवर. अच्छा. सवैया बाजार वाली. अच्छा. One minute, let me see how to remove what is the अच्छा. मैम वो होस्ट है, वो रिमूव नहीं हो सकते मैम. ask to mute. मैम कर दिया, म्यूट कर दिया उन्होंने. Yeah, okay. So this data set, this is the data set. Recency, frequency, monetary value, and you need to understand this data set. Okay, if I say ye recency value 120, what do you mean by that? Recency value 120 hai, this customer ki. This first customer, what can you derive from these data points? Recency 120, frequency is 7, monetary value is शॉप से वो 120 डेज से नहीं आया या हाँ, yes, exactly. Last 120 days से उन्होंने कुछ खरीदा नहीं. Okay. Frequency. If I say Number of times you prefer to buy. Buy. yeah, so number of times this person bought. So on an average, it was like 7 times on an average per year. And the monetary value is the amount of money he spent. Okay, there's one question.
अगर मैम recently value, yeah, मैम फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा कि वो नंबर ऑफ टाइम ही विजिटेड द शॉप और नंबर ऑफ टाइम ही बॉट? number of times he bought 7 times on an average. मैम तो परचेज By जीरो 7 times. मैम फिर परचेज तो जीरो है ना? परचेज जीरो क्यों है मैम तब? हाँ हाँ. मैम वो तो वैल्यू साइन करिए ना। So yeah, see, so it's फ्रीक्वेंसी में तो by- नंबर ऑफ टाइम्स ही विजिटेड ओवर द शॉप आएगा। No, typically he buys 7 times on an average per year. So I'll tell you, but the last purchase he didn't buy. अच्छा जो परचेज है वो लास्ट परचेज है। Is Yeah. the last transaction हाँ. that is done or not? Yeah. So the monetary value. Can you, ma'am, can you please tell about the recency once more? I'll explain this. Even I have a question on this as well. So recency is last 120 दिन से इसने खरीदा नहीं है. So एक बिहेवियर सोचो कि तुम किसी शॉप पे जाते हो, ठीक है, और तुम 120 दिन से तुमने उस शॉप पे गए नहीं हो, तो तुम्हारी probability of buying will increase or it will decrease, or say utility Increase. buying, it will increase. What will it increase or will it decrease? Increase मैम. Will increase. Okay. And the frequency, if you are buying, like the higher the frequency is, what will be the probability of the purchase or the utility of that purchase? Ma'am, maybe higher the frequency, lower will be the lower will be yes purchase, I think. अगर तुम ज्यादा खरीदते हो, you buy. Higher the purchase, higher the frequency. नहीं, higher the frequency, higher will be the monetary value. Higher will be the monetary value, that's okay. But अगर per order ही value बहुत ज़्यादा है, then you can't say exactly that. But I'm asking about the utility of purchase. Okay, let me take you to this concept of utility and then I'll discuss about this. Okay. So this was the data set. I'll discuss about this recency, frequency, monetary value, the purchase, and how to read this data. But before that, we also discussed that why we can't do regression. First is that if I go for a point which is 200 more than 250, then regression will give me negative and negative here and positive values, which is not correct. And if there are a lot of outliers, and this line will go for least square methods and maybe try to go through these outliers, so the value which was coming earlier will see a shift. And the classification, if I'm classifying these higher than these as non-bias and these are bias, so this will this model is not appropriate for classification, the kind of problems we are looking for at. So this is the reason why we can't go for regression. Okay. So a better model is logistic model. And before we go to logistic model, I want to give you certain background of this probability. So do you understand what is probability? So probability of heads. Yes, ma'am. Okay, so what will be the probability of heads if it's a fair coin? 1 by 2. 1 by 2. 1 by 2. That is 0.5. One, yeah, it's like it's 0.5 and by 1 and yeah. So similarly, you can calculate the probability of 1 or 2, whether dice is 1 or 2, times you are rolling it, or probability of diamonds. So this is the probability, that is outcomes of interest by all possible outcomes. So basically, I want you to understand this, that you are taking outcomes of interest. So if you are saying probability heads, so total number of outcomes that head will come and all possible outcomes. So head will come, either head will come or tail will come. So total outcomes of head is 1 and then all possible outcomes is 2, that is 1 by 2. Fair enough. The next concept is odds.
odds is probability of occurring and probability of not occurring. So probability of odds of head will be probability of head occurring, that is 0.5, by probability of heads not occurring, that is 1 minus 0.5, that is tail occurring, and that gives 0.5. Similarly, okay, so basically the formula, probability of occurring, that is P by 1 minus P. Why I'm telling you this is that in logistic regression, the estimates, though we have this probability also, whether a person will buy or not, whether a person will default or not, the coefficients, okay, the beta values, the regression equation, the coefficients are expressed in terms of these odds, or say odds ratios. So I just want you, to have this background clear. Like if I say one coin is fair coin, okay, जितना heads आने की probability है, उतना ही tail आने की probability है, okay. But one coin is a loaded coin, okay. Probability of getting heads are higher. That is 7, say 0.7 and 0.3. So odds of head is 0.7 and odds of getting tail is 0.3. So this is called odds ratio. Okay, so 2.33 because 0.5, 0.5 it will cancel, and so this is odds ratio. So in logistic regression, odds ratio is, it can be interpreted as the increment with the independent variable. So if I say there are two categories, apnea or no apnea, and I'm calculating this, I'm calculating the probability of this through body weight, and if I get the value of odds ratio of 1.07, so this means a 1 pound increase in weight will increases the odds of having sleep apnea by 1.07. So if you are not able to understand it right now, no problem, we'll talk about it again using the example. Okay, so this is the concept of odds ratio, but it is different from probability. So the odds, okay, odds is say P by 1 minus P, okay, but the probability, this is odds of buying. If I say odds of buying, the odds of buying is this, but the probability of buying is what? Probability upon total probability. No, probability of buying. Okay, let me take you through that equation once, and then you'll be able to understand. It's basically, you can say exponential of P upon 1 plus exponential of P, and rather than P is Y. So what is this exponential and what is this P? And basically this is equals to Y. Okay, and this is logistic regression की equation है exponential. Ma'am, I have a question. What is this exponential here denotes? The possible outcome over the total outcomes? Is it so? It is possible. No, I'll tell you about it. What is this exponential? What is this transformation? Exponential here is P by 1 minus P. I'll tell about this. And ma'am, one more point. What is the basic concept behind this odds ratio? Why exactly we are checking the same? Yes. So this is what I want to tell you, that while understanding the logistic regression estimates, you will find this, it is explained like that. Okay. So, if say recency, I'll show you the numbers. Okay. Then it will be easier to understand what is this odds, what is exponential of beta. So exponential of beta, and exponential of beta is basically P by 1 minus P. And what is the equation of logistic regression? Everything we'll discuss. Okay. And ma'am, one more thing, in the first slide where there was a table of recency and frequency, how the combination of both can display the buying behavior or the purchasing behavior of the consumer? Okay, so this is these are RFM values. So in this case, we have taken recency, frequency, and monetary value. Okay, so I'll tell you about like how we do it. So we do it using logit function.
Okay. So what is logic function? That is you are saying about how it tells about the purchase behavior. Okay. Your question is this, right? Yes, ma'am. How through recency, frequency, and monetary value, I can tell about the purchase behavior of a customer. Okay. So these are basically my independent variables, and this is my dependent variable. So like in regression, we did y equals to mx plus c, and we said that, okay, if these are the numbers of advertisement and this is the model, this is some equation, and through this equation and putting the value of x, I can calculate my sales. But that was continuous. Here in logistic regression, we are doing the same thing. But because we can't use y equals to mx plus c, we use another equation, and that is e to power y upon 1 plus e to power y. Okay, and we'll discuss this, that what this equation means, how we can come to this equation. So, but the first thing is that there is this linear equation. We understand this, y equals to mx plus c. Okay, and this x is the independent variable, y is the dependent variable. Say RFM values, so x is these RFM values, and the purchase behavior is something like y. Okay, so what logic? But this is a straight line equation. It can't give a 0 and 1 kind of thing, whether a person will purchase or not. So how we can do that? We can do that using logic model. So logic model, the goal of logic model is to estimate the probability. See, this is not probability. This is utility. I'll explain that concept also. This is utility. It's not probability. So to estimate the probability for a linear combination, that is using RFM value, the linear combination, how you can create a model equation. So you can estimate not y, but the probability. Okay. So we'll derive that equation. मैम मतलब odd values, sorry, ये जो odd वाला चीज जो हम लोगों ने करी, उससे हम लोग खाली final purchase predict कर रहे हैं एक customer का. हाँ, probability क्या होगी उसकी purchase करने की? Exactly, purchase की probability. We will go by step कि हमारी probability value कैसे आई, ये purchase की value फिर 0 and 1 क्यों हुई, y equals to mx plus c क्या है, and then ये exponential of y upon 1 plus exponential of y is actually probability. तो हम ये calculate कर सकते हैं. Probability a person will purchase or not purchase is given by this formula. Exponential of y upon 1 plus exponential of y. And what is y here? This is just a factor like beta naught plus beta 1x plus beta. Dependent variable. Sorry, this y is dependent variable. Okay. But this is not probability. This is our utility. And this beta 1, beta 2 is coefficient, and x1, x2, x3, this is recency, frequency, monetary value. So right now, what is utility here? I'll discuss that. I'll discuss each and everything in detail. Okay. So what is this logic function is? ये linear combinations को it will combine. It will link this linear combination and 0 to 1. Okay. That is my y equals to mx plus c, or if I say beta naught plus beta 1 recency plus beta 2 frequency plus beta 3 monetary value को purchase में convert कैसे करेंगे हम? Okay, we will do that. It's basically e to power y upon 1 plus e to power y. तो ये जो conversion होगा, we will see that. Okay. So logit is log of p by 1 minus p. I'll talk about what is utility and everything. So Randhir mentioned something about minus infinity to plus infinity. So Randhir, if you are present, so you were talking about logit model only. So logit model is log of p by 1 minus p. Basically, what is p? Probability of purchase.
And what is 1 minus p? Not purchase. He won't purchase. Yes. So that is the logit model. Okay, log of odds जिसे बोलते हैं. Log of odds बोलो, logit model बोलो, ln p by 1 minus p is the same thing. Okay. And when we do inverse of this logit model, it is looking like this. It is on y-axis, but when we do inverse, we get the sigmoid curve. Okay. This मैम is क्या ये पीछे वाली स्लाइड आप दोबारा बता सकते हो? ये क्या माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी की इसकी वो लिमिट्स हैं? ये लिमिट्स है. देखो ये ग्राफ जो है ये मीट नहीं कर रहा है इस पे. जो तुम्हारी y एक्सिस है इससे मीट नहीं कर रहा है ये. यस मैम. It's going on, you know, it's not meeting, it's kind of a parallel. So it's minus infinity to plus infinity. And इसको inverse कर देते हैं तो हमारी sigmoid curve आ जाता है, which is called this S curve. Okay. So basically equation हमारी ये थी to make you like everything more clear. मैम how do we get this curve मैम? जैसे linear regression में तो मैम वो करते हैं ना, p-square method यूज करते हैं. हाँ, this is maximum likelihood estimate. I'll talk about that also. ये कर्व क्या कैसे हुआ? हमने क्या किया? हमारी पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ पर देखो, हमारे पास इक्वेशन थी ये वाली बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1. बेसिकली y इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन x1. y इसे हम बोल सकते हैं एज लॉग ऑफ ऑड्स, हम डिफाइन कर सकते हैं. दिस इज द लॉजिक फंक्शन y. इसी को ही हम यूटिलिटी भी बोलते हैं. सो बेसिकली y इक्वल्स टू mx प्लस c को इक्वल उन्होंने लॉजिक फंक्शन कर दिया, इस लॉग ऑफ p बाय 1 माइनस p. ओके, इसको एंटी लॉग लिया एंड देन यू कैन कम, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एक लीनियर इक्वेशन को लॉजिस्टिक मॉडल में डिराइव करके we are calculating the probability of purchase. तो इस linear equation को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log of p by 1 minus p, that is probability of purchase and not purchasing. And इस equation को solve भी कर दिया, 1 minus p इधर ले गए and then we to get this negative this side probability. So ये equation आ गई which is logistic regression की equation. Okay. ये समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. More is like same equation, like वही equation जो थी हमारी log of p by 1 minus. अगर हमारे पास recency frequency monetary value, जैसे किसी ने पूछा था कि recency frequency monetary value है, उससे कैसे purchase निकाल रहे हैं? So recency frequency monetary value, this is utility. Okay. मैम बीटा नॉट बीटा वन ये क्या है? कोएफिशिएंट है. ये कोएफिशिएंट्स है, जैसे हमारे रिग्रेशन वाले मॉडल में था ना, बीटा वन बीटा टू, दीज आर वेट्स और कोएफिशिएंट्स. ओके मैम. ओके, सो बेसिकली ये एक इक्वेशन थी. मैम मुझे 1 माइनस आएगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल वाला नहीं आएगा डिनोमिनेटर में, परचेज वाले इक्वेशन में? नहीं, इसे प्लस 1 कर दिया ना हमने ये पूरा सॉल्व ही कर दिया. यहाँ पर ये देखो, log of p by 1 minus p को हम ऐसे लिख सकते हैं. उसी को सब्स्टिट्यूट करा है मैम, मतलब हाँ, उसी को ही सॉल्व करा है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू इधर ले गए. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई. ओके, आगे मैम. यस मैम. ओके, सो अब इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन से हम यू कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज. ओके, जैसे हमने मल्टीपल रिग्रेशन में करा था, रोड ट्रिप वाला, हमने कुछ वैल्यूज लिखी थी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की और हमारे पास कोएफिशिएंट इक्वेशन आ गई थी. जैसे y इक्वल्स टू mx प्लस c में अगर आपके पास m पता हो, c पता हो, बेसिकली इंटरसेप्ट पता हो, आपको बीटा नॉट या बीटा वन पता हो, रीसेंसी की वैल्यू है, देन यू कैन कैलकुलेट परचेज. ऑल्सो लाइक फ्रीक्वेंसी मॉनेटरी वैल्यू भी होगी, लाइक m2x2 m3x3. So basically you can put it in this equation and you can calculate the probability of purchase. ये भी check करते हैं कि how is it coming. So up till now, are you clear with all this कि probability of success को हम ऐसे निकाल सकते हैं, या probability of purchase is basically this. And
probability of purchase का ये जो equation है of logistic regression is this. Okay. So what is utility? So this is, have you ever heard about utility before in economics? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, Yes, ma'am. Yes. So- Amount of satisfaction derived. sorry, what is? Amount of satisfaction derived. Yeah, satisfaction. Satisfaction by using 1 unit of a commodity. Yeah. So basically, it's the satisfaction derived. So when you buy some product, so you derive some utility, some desire from buying it. So utility will be either 0 or 1. Either you will buy the product or you will not buy. So you can say, if I'm not buying it, my utility from not buying is more. My satisfaction from not buying is more. I don't want to spend money. I feel my satisfaction on not buying is more. So I will not buy. Okay. So basically, a consumer has a utility from buying and a utility from not buying. So utility of buying is this and utility of not buying is 0. And consumer will buy अगर उसकी utility buying की 1 हो जाती है ये या फिर buying की ज़्यादा है then utility from not buying. Okay, so you can't, this is cardinal, this is not cardinal, this is not 5.4 to utility 5. You can't give as a points. You will say either you prefer buying or you will not prefer buying. So to make these concepts like more clear, you can go through these questions and you can solve these questions. Okay. So utility from buying, according to the logic model, if the utility from buying is estimated to be equal to 2 for a consumer and the utility from not buying is 0, then what is the probability of buying? And then what are the odds of buying for this consumer? इसका formula है हमारे पास. Basically, utility of buying P is equal to expo. Yes, ma'am. Utility of buying आप इससे निकाल सकते हो. Okay. And VB is 2. Basically, utility of buying is utility VB. This. Or in question is 2. So utility of buying you can get from here and you can calculate it exponential of 2 basically. And similarly, you can calculate the probability of buying if the utility is 2. So hope you are able to understand by now कि logistic regression की equation क्या है, वो how it is related with this utility concept or log t by 1 minus p, how we मैम आप derive ये this क्वेश्चन मतलब मैम ये एक बार फिर से एक्सप्लेन हाँ कर दो वैल्यूज कैसे पुट होगा करके ये आप वाला. दिखा सकते हो मैम हाँ because एक बारी सॉल्व करके बता दो ये हाँ क्वेश्चन. आई थिंक दैट विल बी मोर यस मैम. मैम बिकॉज ये तो खाली हम मैम लोग एक आप सॉल्व को कर लो एक हम कर इक्वेशन लेंगे. पता चला है. यस मैम. it's simple. That is basically this is utility VB. Just a minute. This. Let me remove this. So VB is equals to 2. yeah. So अगर utility VB is equals to 2 and VB को क्या लिख सकते हैं हम log of P by upon 1 minus p. P is equals to 2. अब क्या करेंगे, हमें probability निकालनी है, ठीक है. So probability तुम्हें इक्वेशन से पता है what is the probability? It is this. And are you able to understand? It is this. Basically इसको क्या लिख सकते हैं P by 1 minus P. Are you able to understand this? Yes ma'am. So ये दो चीज ही है, इससे ही ये सॉल्व होगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. log of p by 1 minus p. यहाँ पे ये वाली वैल्यू समझ में आ गई. log of p by 1 minus p आगे ये हो जाएगा. this log of p by 1 minus p. मैम ये जो 2 आया वैल्यू ये b0 plus b1 x1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है क्या मैम? हाँ exactly. मैम तो इसमें b0 और b1 की वैल्यू क्या है? e to power 2 upon 1 plus e to power 2.
समझ में आया? लॉग ऑफ नहीं, p मैम। 1 माइनस p यूटिलिटी, दिस इज यूटिलिटी, ये लिखा है ना मैंने यूटिलिटी, जस्ट वन सेकेंड, यूटिलिटी y इज इक्वल्स टू यूटिलिटी, जैसे log ऑफ p बाय 1 माइनस p भी बोल सकते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या था, यूटिलिटी क्या है 2, राइट? सो बेसिकली हमारी ये वाली वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, log ऑफ p बाय 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 2, या फिर p बाय 1 माइनस p इस, या ये वाली वैल्यू को हम कह सकते हैं इज इक्वल्स टू 2, बेसिकली e टू पावर 2 बाय 1 प्लस e पावर 2। सो यू गो थ्रू दीज टू इक्वेशन, यू चेक दिस, एंड ये वाली भी है तुम्हारे पास वैल्यू, एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो द रीजन आई एम नॉट सॉल्विंग इट सो दैट यू कैन फाइंड द लिंक बिटवीन दीज टू, पर ये इट्स सुपर इजी। ओके, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको यूटिलिटी पता है, और यूटिलिटी का आपके पास फॉर्मूला है दैट यूटिलिटी व्हिच इज इक्वल्स टू log ऑफ p बाय 1 माइनस p। मैम इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आने से कुछ होता है क्या? मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या डिनोट करती है और पॉजिटिव वैल्यू क्या डिनोट करती है? यू जस्ट ट्राई टू चेक, पॉजिटिव और नेगेटिव हम एस्टिमेट्स से चेक कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के एस्टिमेट से। मैम जैसे आपने अभी e की पावर e टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू पावर 2, हाँ, इसकी but that वैल्यू नेगेटिव 1 पॉइंट समथिंग आ रही है मैम। नहीं, हाँ मैम, it is not, एक सेकेंड, you just try and solve this question। फिर से ये देखना what is v equals to 2 is log of, because it's not e to power 2, it should be different। मैम एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो, बिकॉज यस मैम, बिकॉज मैम मेरे को भी समझ नहीं आया। नहीं आ रहा है समझ में। आपने ये पूरा सॉल्व करा वो समझ में, लेकिन क्वेश्चंस में कैसे पुट करेंगे वैल्यू मैम वो वी नहीं कैन समझ में आ रहा है। अंडरस्टैंड दैट v is equals to probability upon 1 minus probability and all the values are there, but still to be confirmed, if you can solve one question it will help us। यस मैम। अच्छा, so मैम हाँ, so मैम ऊपर से जा रहा है। नहीं जाएगा अगर तुम ये सॉल्व करोगे। मैम एक आप करके दिखा दो ना, फिर हम लोग को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। मुश्किल से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, सब कुछ जा रहा है वो कॉन्फिडेंस भी। नहीं, वो इट्स सो इजी, ऐसा नहीं है। मैम इसको तो देख के डर लग रहा है, आप इजी कह रहे हो। एक बार तुम करोगे ना, सिर्फ एक बार, it will be, इसका वैल्यू मैम पॉजिटिव आ रहा है 0.88। हाँ, तो तुमने, उन लोगों ने गलत निकाला था, e टू पावर 2 1 प्लस e टू पावर 2, ये वाली है ना, ये प्रोबेबिलिटी निकाली ना। मैम ये प्रोबेबिलिटी निकलेगा 0.88। मैम ये 1 प्लस ई ब्रैकेट में है नीचे वाला। हाँ, नहीं ब्रैकेट में नहीं है, 1 प्लस, हाँ सॉरी 0.88 आ रहा है, मैंने नेगेटिव e 1 माइनस कर दिया था, ये ठीक है, 0.88 आ रहा है। तो बेसिकली हमारा इक्वेट ही करना था, दिस इज लाइक सो इजी, तुम लोगों ने निकाल भी लिया। एक ना फालतू में ना थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल्स देख के यू सी दैट इट्स लाइक सो मैथी कि अब तो हो ही नहीं पाएगा। हम 2-3 ने निकाल लिया, बाकियों को नहीं समझ आया। तो 2 से क्यों निकला, बाकियों से क्यों नहीं निकला? 2 को ऑलरेडी आता होगा। नहीं मैम निकला इसलिए बिकॉज आपने लिख दिया और खाली कैलकुलेट कर दिया हम लोगों ने, हम लोग को भी समझ में नहीं आया था मैम। अच्छा, इसको आपने नहीं मैम शिखा बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्कुल भी नहीं, मैम बहुत ही आंसर बिल्कुल तो पता चले कि मैम उनका ये आंसर है, ये सही है या नहीं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, तुम्हारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं और क्या क्या वैल्यूज तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डाल दिया हमने, प्रोबेबिलिटी इज दिस, ठीक है। व्हाट इज द, ये क्वेश्चन है ना, इफ द यूटिलिटी फ्रॉम बाइंग इज इक्वल टू 2 फॉर अ कंज्यूमर, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग फॉर दिस कंज्यूमर। ओके, और हमें पता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है लॉजिस्टिक रिग्रेशन से प्रोबेबिलिटी निकालने का, दैट इज p इक्वल्स टू e टू पावर
बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 अपॉन 1 प्लस ई टू पावर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज स्टेप 1। ये समझ में आया? ये समझ में आया? प्रोबेबिलिटी, यस मैम, यस मैम। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी कुछ याद मत करो, बस एक चीज है कि प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है, ओके, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की इक्वेशन थी प्रोबेबिलिटी ऑफ परचेज के लिए, ये फॉर्मूला है, ओके। दूसरी चीज हमें यूटिलिटी दी हुई है, एंड व्हाट इज दिस यूटिलिटी? यूटिलिटी इज 2, और यूटिलिटी इक्वल्स टू 2 को हम log ऑफ p बाय 1 माइनस p भी लिख सकते हैं, या फिर बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 भी लिख सकते हैं। बेसिकली इसमें से देख सकते हो तुम, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 भी लिख सकते हैं, ये ही यूटिलिटी है, यही log इट है, या फिर log ऑफ p बाय 1 माइनस p, या ln p बाय 1 माइनस p कह रहे हैं। तो बेसिकली तुम्हारे पास दो इक्वेशन है और तुम्हें वैल्यू निकालनी थी, एंड यू कैन डू इट लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला था, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 ही मेरी यूटिलिटी होती है, विच इज इक्वल्स टू 2। बेसिकली बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 की वैल्यू 2 है, तो e टू पावर 2 अपॉन 1 प्लस e टू पावर 2, ये कैलकुलेट कर दिया, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, ओके। ठीक है, या फिर अभी भी मैम e की पावर v अपॉन 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर v आ जाएगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। So now you can calculate the second question. दोनों क्वेश्चन कैलकुलेट करना, ठीक है। I'll discuss this on Monday की किसने किया किसने नहीं किया। Okay. So that was the relationship between utility and our probability. So let's read the data. Okay, क्या data था हमारे पास? How many days since last purchase, how many times the consumer buys per year, and total dollar amount spent per year, और basically purchase हुई ना नहीं हुई जब हमने उन्हें basically last purchase जब हमने वो कैटलॉग सेंड की, and then we check whether they purchased or not. Okay, ये एक साल का हमारे पास डेटा था कि ये पर्सन कितनी बार 120 दिन से आया नहीं है, बट नॉर्मली ये 7 बार एक साल में परचेज करता है और स्पेंड करता है, टोटल डॉलर अमाउंट इसने एक साल में इतना स्पेंड किया, और जब हमने उसे कैटलॉग भेजा तो उसने परचेज किया या नहीं किया। We check the behavior in next 10 days or 15 days, whatever the time period is. Okay. मैम ये जो मॉनेटरी वैल्यू है ये एक साल का स्पेंड है? हाँ, टोटल डॉलर अमाउंट स्पेंट। ओके, एंड परचेज जो है वो हमारी लास्ट हमने जो परचेज करा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू 0 और 1। अगर 0 है दैट मींस कि नहीं करी है लास्ट परचेज, एंड 1 है तो परचेज करी है। हाँ, बेसिकली हम चेक क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि जब हम कैटलॉग सेंड कर रहे हैं, when we are sending catalog to these customers which have this recency frequency monetary value का डेटा हमारे पास, जब हम कैटलॉग इन लोगों को सेंड कर रहे हैं तो इनमें से कौन से लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो कैटलॉग सेंड करने के बाद, और कौन से नहीं करते हैं, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा बन जाता है। फिर हमारे पास टेस्ट डेटा होगा जिसमें हमारी परचेज की वैल्यू नहीं होगी, बेसिकली हमारे पास नए कस्टमर्स हैं, हम अभी पुराने कस्टमर्स पे हिस्टोरिकल डेटा से हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे, और उस मॉडल को हम फिर यहाँ पर परचेज की वैल्यू नहीं होगी, हम न्यू कस्टमर्स की प्रोबेबिलिटी देखेंगे या प्रेडिक्ट करेंगे कि वो परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। ओके मैम, गॉट इट। मैम जैसे वो लोकेशन वाला किया पहले, लोकेशन, हाँ मैम वो डिफरेंट लोकेशन ट्रिप वाला जो था मैम, एग्जैक्टली पहले हमारे पास डेटा था तो हमने उससे ट्रेन कर दिया, ये सारी चीजें थी हमारे पास, हमने उसे ट्रेन कर दिया, पर अब हमारे पास ये चीज है नहीं, डिफरेंट डेस्टिनेशन हमने डाली, तो उसी मॉडल को ट्रेन डेटा पे जो हमारा मॉडल था उसे हम टेस्ट डेटा पे रन करेंगे। सो बेसिकली आप फिर आपके पुराने कस्टमर्स के परचेज बिहेवियर को देख के, जब उन्हें कैटलॉग सेंड किया गया उनके परचेज बिहेवियर को देख के आप नए कस्टमर्स के ये बिहेवियर, ये चीज इन इनपुट से
प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उन्हें अगर कैटलॉग भेजेंगे तो वो परचेज करेंगे या नहीं। तो जो परचेज करा था जिन्होंने, जब भी हमारा प्रेडिक्शन आएगा उसके बेसिस पे वी कैन डिसाइड कि हम उन्हें कैटलॉग सेंड करें या ना करें। ओके ओके मैम। So this is one thing. So let's understand this data. So if someone didn't buy for a long time, we have already discussed, then the utility of buying will be positive. किसी ने अगर 120 दिन से बेसिकली रीसेंसी वैल्यू 120 है, अगर उसने 120 दिन से नहीं खरीदा है कोई प्रोडक्ट तो वो खरीदेगा। अगर मैंने कोई चीज अब कल ही खरीदी है तो आई विल नॉट बाय। ओके, दो यूटिलिटी विल बी पॉजिटिव। बट मैम जो डेटा है उसमें तो दिखाया है कि नहीं खरीदा। तो बट दिस इज इट्स अ फैक्टर ऑफ 3 things, 127 monetary values. So all these, so it's not just one independent variable, it's an interplay of these 3 independent variables. Okay, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन रन करते हैं, like हम रिग्रेशन रन करते थे LM फंक्शन से, यहाँ पर जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल GLM यूज करेंगे। परचेज इज आवर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड these 3 आर our independent variable. ठीक है, परचेज इज डिपेंडेंट बिकॉज वी आर प्रेडिक्टिंग परचेज एंड वी आर यूजिंग फर्स्ट आवर ट्रेन डेटा because we want to build our model, we'll want to check our model, and then we'll run that same model on our test data. So just like linear or multiple regression, we can check this estimate and summary of this model. So I want you to focus on these coefficients: recency, frequency, monetary value. तो क्या कर सकते हैं हम? We already have this regression equation, isn't it? ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन। वही वैल्यू है ना, e to power y upon 1 plus e की power y, same, isn't it? Logistic regression equation. So what we can we can put these values, for example 127 monetary value, this basically जो हमारे फर्स्ट कस्टमर की वैल्यूज हैं 127.41. You can do this calculation in Excel or manually, like we did in multiple regression. We calculated I gave you one question to calculate manually. Okay, so you can calculate this and you can calculate the probability of purchase of this customer. Obviously we'll do it in R, we'll not be calculating manually, but just to understand this, and you can calculate putting the value of recency, frequency, monetary value of this first customer, and then you can calculate the probability of purchase. So I have already discussed this. This is the logic model and it tries to give a best fit line. We'll discuss this later and on maximum likelihood. But the second thing is, whenever you check the estimate, the first thing is that whether the model is significant or not, isn't it? जैसे हमने multiple regression में या regression में भी check किया था, whether the model is significant or not. So we'll do, the first question should be whether the logistic regression model is significant or not. And how we assess this significance? We assess this by using likelihood ratio test. So कुछ नहीं करते हैं, हम 2 मॉडल बनाते हैं। एक मॉडल होता है नो इंटरसेप्ट मॉडल, बेसिकली RFM वेरिएबल्स यूज नहीं करेंगे, जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो यूज नहीं करेंगे, और एक में हम RFM वेरिएबल्स डाल देंगे, ओके, जो हमारा मॉडल हम बोल ही रहे हैं, and we'll see whether the model is significant or not. So एक ये मॉडल है, that is purchase, that is dependent variable, और हमने कुछ वैल्यू नहीं डाले, बस 1 इसमें वैल्यू रखी है. This is how you check no variables वाला मॉडल. और दूसरा मॉडल जिसमें हमने कहा कि no, purchase is dependent on recency, frequency and monetary value. तो हमारे कुछ ये variables आते हैं. Okay, let me make it like more clear. So you can run more packages to make it like to create this kind of table.
So यहाँ पर chi-square test हुआ and this is less than 0.05. So what is this telling us? What is this telling us? This is for second model. Second model as in जहाँ पर हमने RFM values देखी. So we are checking कि whether RFM value has any relationship between, whether there's any relationship exists between the RFM and purchase. Okay, and we can check it through the p-value of chi-square test. So the p-value is less than 0.05, that is alpha. So what this suggests? Maybe there is no relation between the two. If p-value is less than 0.05, significant हुआ. Significant. हुआ, तो yes. relation होगा. Then there is a relationship between RFM and purchase. Okay. There's one more thing about this residual deviance and this deviance also. So larger the deviance number is, that the more likely that these variables are significant predictors. It's more like, R square and adjusted R square kind of thing. Okay, not exactly the same, but you can see it in that way. So deviance की value भी हमारी बहुत high है. So higher the deviance, that the more significant this model is. So though more significantly it can predict the purchase behavior. So this answers our first question. Higher Whether would the be the model, Ma'am, predicted I have variation होगी ज़्यादा. no, the deviance value. Sorry, what? Ma'am, deviance ज़्यादा है तो मैम कह रहे हैं higher the value of deviance, more is the chances then the predicted variation we'll be knowing rather than the unpredicted variation, just like we did it in the trip data set. So what do you understand by deviance? I told you look at like R square. So deviance means that like here 30.4 or 107.1, this much of deviance independent variable, whether the person will purchase or whether the person will not purchase, can be explained by the independent variable. It's kind of that thing. Ma'am, is it kind of the difference between two? Yeah, that's what the value is saying. Difference is this. दो मॉडल का जो डिफरेंस है वो ये है कि वो हमारा डेविएंस है. नहीं डेविएंस is like something you can, it's like checking like R square. It's like more of like a strength कि whether these variables are significant predictors of purchase behavior. Basically RFM value से लेके जो हम ये purchase predict कर रहे हैं, how significant it is. One way is तुम ये chi-square value 0.05 से है तो it's like significant. The model is significant. Okay. And next is that you can check this deviance and this residual deviance. So this value is and high. ma'am, if we have to write and like we have to give our insight on this, then if we have to write this deviance 1.07, so how we'll write in the report, like what we have concluded? You will say that the deviance is high. You will just say that the deviance is high, or And ma'am, what is the benchmark which tells that this is the benchmark and more than this will be high and more than okay, so the benchmark is this. The difference you can, if you have to write, so you can say the difference here, the difference, this difference is small, and this difference without the model, without RFM variable is high. So this difference is small, so this is a better predictor. Also, the chi-square value is significant. So there is a significant relationship between the purchase and the independent variables, the RFM values. Yes, ma'am. Explanation समझिए, but what difference? मतलब you have circled the lower 30.4. Okay, it's not like exactly like that. Just exactly तुम R square से या linear regression या multiple regression में जो values आई थी, you can't draw parallels एकदम से वैसे.
you can say कि ये model significant है या नहीं by selecting. मैम वो तो chi square से पता चल गया कि significant है. हाँ बस और ये कि इस वाले मॉडल से और इस वाले मॉडल से आप ये चेक कर रहे हो कि whether there is a higher difference or lower difference. After that you can see some coefficients also. We'll come to that. But yeah, this is something you can't say कि 70% 80% exactly वो नहीं. Kind of this you can say कि 30.48% of deviance is explained by this variable. Or but more better way is this. ये वाला जो difference होना चाहिए, ये difference small होना चाहिए. Chi square की value less than 0.05 होना चाहिए. ये higher value of this is also good. So these 3-4 parameters. So every model, every algorithm has different way of looking at the significance. Ma'am, okay, ma'am. One thing that deviance should be higher. Like ma'am 0.5 से less होता है हम chi square की value, p की value तो वो हम करते हैं. इसमें किस चीज से check करें कितना higher from any value deviance की value? Okay. So ये जो है हमारी chi square value है ना, this is first is this कि हमारी जो chi square की value है is less than 0.05. ये मॉडल सिग्निफिकेंट है. मॉडल सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है? हमारे पास एक मॉडल था जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं लिए. हमने कहा कि जस्ट 1 से हमने परचेज बिहेवियर किया इन नो इंटरसेप्ट मॉडल. और ये वाला मॉडल था जिसमें हमने रीसेंसी, फ्रीक्वेंसी, मॉनिटरी वैल्यू ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लिए. और इस chi square से क्या समझ में आ रहा है? इट्स लाइक f स्टैटिस्टिक. यहाँ पे हमारा बाइनरी है, वी आर यूजिंग chi square and we are checking the p value of this. It's telling us कि whether a model is significant or not. Whether अगर recency, frequency, monetary value से अगर आप purchase behavior predict कर रहे हो, then it's significant. You can predict purchase using recency, frequency, and monetary value. Ma'am, sorry, I'm so sorry. Can I ask? Yeah, please. Ma'am, one thing that I can observe is that 107.14 is basically the difference of 137.628 minus 30.487, right? That's the difference. Like even if we'll do subtraction, that's what is being shown. Okay. Yes. Okay. So basically 107 is, that's how we calculate it. It's the difference between two. That's a good insight. I have not looked it that way. Yeah, but it looks the same number. Yeah, it is. This is same. Yeah. This is higher. And also this point that the difference is low here, difference is high here. It gives the same thing. यहाँ पर difference high है और यहाँ पर difference कम है. That's giving a good value. That means model is good. Or if you say this value is higher, or the difference between this is higher. Yes, ma'am. Giving the same. Yeah, thank you. Yes, you can look at that way also. And ma'am, one more thing, what the tilde sign means? So it's literally purchase purchase tilde 1. This is just nothing that we are not giving any variables. Tilde, that is the operator. We keep dependent variable here. Aggregation में भी हमने ये use किया था tilde, independent dependent को separate करने के लिए. My only point of asking this is when we use this. So we used to use that greater sign and then hyphen to describe it as a way of that denotes, right? So what does this sign means? Okay, this sign means this is just nothing. Yeah. This is purchase. This is my dependent variable and this is my independent variable. That's it. And to differentiate the two, this sign is being used. Is that? Yes. Okay. In regression, it is used like this. Otherwise, हमने aggregate function भी use किया था. There we use it as like यहाँ पर continuous और इसे aggregate कर दो by the categories of categorical variation. Okay. So this is how you can check whether a model is significant or not. This is my first question. So let me run through this quickly. And second is the estimate values of beta. Basically, it's nothing. Then you have to calculate the values of beta. You take the coefficients, and this is just odds of buying.
Okay, these values. And you can, if you increase, so how to read this? How to read this? What does this intercept means? Intercept means if recency, frequency, and monetary value all are equal to 0, then the utility from buying is minus 30. So somebody asked, like, what does minus sign will give? So it is the odds of buying. So odds of buying for a customer is minus 30, which gives a kind of, probability that the customer will not buy. It's not exactly the probability, but okay, the number is low of utility, the desire is negative, that means he will not buy. Okay, and you can go through this slide that how, if you improve the frequency by 1 unit, let's say from 7 to 8, the utility of buying will go up by 59. So if you read this number, frequency, so how are you going to read this number, these coefficients? It's like that holding everything else constant. Basically recency और monetary value को हम नहीं छेड़ रहे हैं. Whatever the recency and monetary value is of that customer, अगर हम frequency अगर उसकी 7 times ही in an year अगर 7 से 8 कर देते हैं, तो उसकी utility of buying 59 points से increase हो जाएगी. This is basically the measure of impact on utility, and this is nothing. This is beta naught, beta 1, beta 2, beta 3. The coefficient of your logistic regression equation. Okay. Next is the probability of buying. हमने अभी utility देखा, हमने this exponential of beta. You can go through this also. What is exponential of beta? Next is probability. Now from these values, you can calculate the probability. Okay, this is the probability of buying of this customer. This is the probability of buying of this customer based on this recency, frequency, monetary value. Okay, and once this probability, you got these probabilities, what you can do, you can classify whether the person will buy or not buy. And how you can do that? You can put a threshold. Say, you can say that give the value as purchase or purchase as 1 if the threshold value is greater than 0.5. और अगर 0.5 से कम होती है, then tell it's 0. So basically जिसकी भी 0.5 से कम वैल्यू है वो परचेज करेगा, give it a value 0, and नहीं करेगा and परचेज करेगा अगर उसकी 0.5 से probability value ज़्यादा होती है. So this is how you predict purchase. You train this model and then you can evaluate the model using this confusion matrix. हमने probability की value existing customers की थी ना? हाँ, ये probability value existing customers की थी. अब हम क्या करेंगे, इसी मॉडल को हम उस मॉडल पे रन करेंगे, टेस्ट मॉडल पे. इस मॉडल को हम टेस्ट मॉडल पे रन करेंगे. बेसिकली मैंने इसमें ही ये इसमें ही मैंने ये रन कर दिया. बेसिकली ये भी मैंने टेस्ट मॉडल पे ही रन किया हुआ है. So you can do that. आपने ये वाली वैल्यूज से प्रोबेबिलिटी वैल्यूज निकाली, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज से आपने परचेज प्रेडिक्ट कर दिया 0, 1. आप ट्रेन डेटा सेट पे भी चेक कर सकते हो ये प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्टेड परचेज, और या फिर आप टेस्ट डेटा पे ही वो मॉडल रन करके यू कैन डू दैट. यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स. ओके, प्रोबेबिलिटी 0.5 हमने कैसे चूज करी है? ये एक थ्रेशोल्ड हमने रख दिया. ये हमने चूज किया ना? हाँ, ये हमने चूज किया है कि अगर 0.5 ये हमारा सिग्मॉइड कर्व है, this is 0, this is 1, this is not buy, this is buy, this is the threshold I have kept at 0.5. जिसकी भी प्रोबेबिलिटी इससे ऊपर हो गई उसे कह दो परचेज, जिसकी प्रोबेबिलिटी इससे कम हुई 0.5 से कम उसे कहो 0, that is not purchase. Maybe threshold probability we have to calculate, or is it we can take according to our wish? So generally we'll take 0.5 as threshold. Okay, and it will give you a confusion matrix. Okay, पर अगर एक ये भी second thought is like अगर हम 0.5 ना रखें threshold value, अगर हम 0.6 रखें, in that case you can use ROC curve. So these two things, confusion matrix and ROC curve, is used to evaluate the model. So I'll share this data set, and before we meet on like Monday, so try, I'll give you 2 data sets.
So try running all these codes. I'll give you RMD files also. Try running all these codes. And one more important thing is, ये जो base probability है, ये देखो जैसे ये इस फर्स्ट कस्टमर के लिए है बेस प्रोबेबिलिटी 0.00300728. यू कैन कैलकुलेट इट. यही वैल्यूज मैंने तुम्हें इसमें डाली, इसमें दी है. ये कैलकुलेट करके देखना. यू विल गेट द सेम वैल्यू, बेस प्रोबेबिलिटी वाली वैल्यू. ओके, ये वाले इक्वेशन से जो वैल्यू आएगी बेस प्रोबेबिलिटी की, वो सेम वैल्यू है जो हमारी यहाँ से आ रही है. सो होप अभी तक you are clear with these things. Ma'am, can you upload the recording of this class and the previous class on LMS? Yes, ma'am. Okay, or I'll share the link. Okay, I'll do that. But are you able to understand up till now कि हमने क्या किया इसमें? हमने logistic लिया, probability निकाली, threshold value रख दी, and we are saying then it's purchase or not purchase. Like, are you able to get like a little bit of idea what we do here? Yes, ma'am, little bit. Yes, ma'am. Okay, so we have 2 more sessions on logistic regression, and I also want you to go back to that assignment that you gave me and check, you know, which I discussed in previous session की advertisement की values क्या होगी, dummy variables अगर हम करते हैं तो how we you know explain the solution. Intercept value से क्या पता चलता है, higher than intercept value. तो डमी वेरिएबल 4 के जगह हमने 3 रखे, why, all those things I discussed that in previous session also. So okay, so let's meet on then Monday, and I'll share this PPT as well as the recordings. Okay. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Ma'am, if possible, then you can taught us this again, one time again. Okay, I'll do that. I'll do that on Monday. No problem. But please go through the, you know, the codes. Go through those codes. Okay. Do post whatever questions you have. Go through those codes. Run that. I'll give you one more data set. Run it on that data set also. Okay. तो ये समझ में आ जाएगा. तुम 3-4 बार कोड्स रन करोगे, फिर देखोगे कि क्या वैल्यूज आए, उसे चेक करोगे. ये लॉग ऑफ ऑड्स और ये वाला जो करते हैं, check the equation, all those things. You will be able to understand. All right, then that was all. Okay, see you on Monday then. हेलो मैडम, आप डाउट सेशन लेना चाहते हैं तो चल गया था गिट्ठी में हाथ ना, बोले वाली गिट्ठी में डाउट सेशन. ओके, हाँ आशीष जी, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ. कल आके दो बोल कर रहे हो. हाँ, मंडे के बाद आप रख सकते हो. इसकी वजह से आज जला है मेरा. मंडे के बाद. मंडे को लेना है आपको तो मंडे को देख लीजिएगा. ठीक है. ओके. ओके देन. ओके, थैंक यू.